जरूरत होगी। तो जो ये स्ट्रक्चर नंबर 4 आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस का मैकेनिज्म क्या है कि इस टेंस में कॉन्टिन्यूअस की तरह ही जो लास्ट में कॉन्टिन्यूटी को, एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, लेकिन इसमें एक टाइम, एक समय भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं खेल रहा हूं और मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, इन दोनों में फर्क होगा। तो मैं खेल रहा हूं तो इसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं तो इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आप कह सकते हैं कि टाइम फैक्टर का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आपको आने से, ये डिफरेंस आने से आपके टेंसेस में भी चेंजेस आते हैं। तो इसको बोलना कैसे होता है कि जब भी ऐसा कुछ ख्याल आए कि उसमें टाइम लगने वाला है, लग रहा है और कंटिन्यूअस है, तो तुरंत हम उसमें हैज बीन या हैव बीन को यूज करेंगे। और सिंस एंड फॉर ये भी मिनट कर लीजिए कि सिंस और फॉर टाइम के लिए भी लगे। जैसे कि मैं कल से ये देखता आ रहा हूं, तो कल से एक टाइम है और देखता आ रहा हूं, टाइम लग गया। तो आई हैव बीन वॉचिंग, यहां तक तो आपने बोला, लेकिन आपने टाइम ही नहीं बोला है, तो उसके लिए अब आपको सिंस एंड फॉर को यूज करना। अब यहाँ पे एक मैटर होता है कि सिंस एंड फॉर कैसे यूज होगा, तो इसको भी आज डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना पेन लेते हैं एंड आई जस्ट सेलेक्ट द कलर आल्सो। I'll select red. Yes, it's working. So if I just talk about this tense, and as I just given you the introductions that whenever you feel raha hai, rahi hai, rahe hai at the last of the sentence, and with this continuity, when you feel the time is also given over there, so you must you have to think about these two words, has and have been, and then after the ing form, and then after since and for, and then time and durations. So what we have to think, we have to think has, have been, and the fourth form, and since and for according to the time factor. What would be the mechanism, and where, which place would be, since and for would be used at which place. So this is a matter of consideration, we will discuss later. But abhi just we have to understand हैज हैव की जहां तक बात है, तो वो हैज हैव हम लोग जान चुके हैं कि हैज हैव को यूज कहाँ करना। हैज के लिए हम लोग यहाँ पे एक कैटेगरी बनाए हुए हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, ये आपको हैज। बाकी के लिए हैव को यूज करेंगे। सो आई हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, राहुल हैज बीन। और यहाँ पे अगर बात करते हैं, आई हैव बीन, वी हैव बीन, you have been, they have been, and boys have been. So we have already, segregated कि किस जगह पे आपको has और किस जगह पे आपको have का यूज करना। And the fourth form of verb, ing, I have been doing, you have been doing, I have been eating, he has been reading. इसका practice करना है. This is also the continuations, but with taking time, the period of time, or you can say the point of time. तो उसके लिए since and for की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीख गए, आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है। He has been doing, she has been doing, it has been happening,
and Rahul has been doing. यहाँ से उठाएंगे तो I have been, we have been, you have been, they have been, boys have been, और सब में ing फॉर्म यूज करना है. बाद में हमें since and for मिलेगा जो कि टाइम के अकॉर्डिंग ही यूज होता है. Since and for is used as per the time factor. So what are the, I mean the form of the time factor जो कि has जो कि since और for को अलग अलग यूज करने के लिए कहता है. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि the since और for, बस आपको एक चीज ही बताएंगे कि जिस टाइम का प्लूरल नहीं बनता है उसमें हम लोग since को यूज करेंगे, और जिस टाइम का प्लूरल बनता है उसके लिए हम for का यूज करेंगे. मतलब कि if I just talk about Monday, so we never say Mondays, right? We never say Mondays. If I just talk about January, so we never say Januaries, right? 1997, we never say 1997. If I just talk about childhood, so we never say, I mean, use childhoods. So those nouns, or you can say the time, which cannot be transformed into plural form, there we should use since. Now, if I just talk about the use of for, so you can say it is used with those nouns where the plural is possible. Means if you're just talking about day, so there would be days. Month, there would be months. Year, there would be years. Hour, there would be hours. Minute, there would be minutes. So whatever the time factor where the plural form is possible, so there you should use for. And where the plural form is not possible, there must be used since. I hope you understand. So you have to think about that what kinds of time factor is going to be used. So just according to the time factor, you have to use since, for. So now we can sum up this ones by saying that if you get, I mean, the proper time, if I'm just talking about the proper time, we can say the proper time. It seems like the proper noun where the plural is not possible. And this is like common noun, or you can say that common time where the plural is possible, right? So one thing, I mean, I would like to add one more important point over here, which is very important for you. The things which you have to keep in your mind, that where we use article A. For example, if I just talk about India, so India is a proper noun, right? So there is no need to use article. India, an India, no, not at all. Means we not, I mean, we never use any article before. I mean, I'm just talking about a or an, not the. Article B is a or an. We never use article a or an before these proper nouns. For example, a January, a Monday, a 1997, a childhood. We never say, even we never use any a sun, a India. We never use like this. But as far as common noun is concerned, like boy, if I'm just using boy, so we can easily use a boy and boys, right? So those nouns which can be easily transformed into plural form. So we can use article a or an before the singular number of nouns. Means we can use a boy. Likewise, we can use a day, a month, a year, right? An hour, a minute. So if I just talk about long time, I'm going to write long time.
and the second is a long time. So by using article A, you can easily identify that what kind of the time factor is it. Long time means it's from the common noun, right? Because I have used article a long time. So for the common noun, as I just given you already, that whenever you get common nouns, so you must use for. So for will be used before a long time, for a long time. So now if I just talk about only long time, if it is mentioned over there without using article, means you must use since long time. So you should never use since a long time. For a long time, or you can say since long time if article is not used over there. I hope you understand everyone. So if we just talk about the uses of since and for, if you have you are in dilemma, you are in doldrum, you are in confusion that what kind of time factor must be used after using since or for. So now from now you can easily erase that kind of concepts, I mean confusion from your mind, and you can easily use since and for with the appropriate time factor. If the time is totally proper, you can say where the plural is not possible, so since will be used. Other than that, where the plural is possible, so there you must use. I hope you understand. And if you have any queries related to these, you can just comment, or you can ask me anytime. There are a lot of ways to ask the questions. Now I would like to change the slides, but before to change this one, Sir, sir, yeah, sir, long time is since or for. Once again, repeat. okay, fine. As I told you, Akash, that if long time is given over here, and before long time article a has been given, and in another way you can write long time without using article, bare article, long time. So what are the differences? You cannot predict that, you cannot analyze that this long time is a common noun or the proper noun, because long time is only long time. But with the help of article, you can easily understand that article is a and an is used before common noun. So as I told you earlier, that with common noun you must use for whenever you see that one. For example, if I just given a day, so you can easily understand whether it is day, a day, or the 3 days. So whatsoever the conditions, you must use for a day or for 3 days. You will never use since a day, right? So where the article a or an has been given before time factor, you must use for over there. And if the article is not given, so there you must use since. I'm just talking about in those cases where you are not unable, you are unable to predict that what kind of time factor is it, right? So if Monday is given, only Monday, without using any article, so it would be what? There you must use since, right? And if 3 months is given, for example, 3 months is given, so there would be for 3 months, because this is common noun and this is, you can say, the pronoun. It is as easy as you can understand. I hope you. If still you are not getting, so you can just text me on WhatsApp, or I just given you already the Telegram channel, the link of Telegram. You can ask me. You can easily put your questions over there. So now, guys, we have already discussed that has and have, where the has and have would be used, the fourth form of the verb, and the
uses of the since and for, and I just given you lots of examples of the time as well. तो चलो इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं कि अगर मुझे दिया है कि जिस तरीके से याद दिया मार्को 2 घंटे से घूम रहा है, सो अगर मैं ये 2 घंटा हटा दूं तो सिर्फ क्या बचेगा, मार्को घूम रहा है। तो यहाँ तो इजीली हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं, मार्को आर विजिटिंग, राइट। बट यहाँ जहां दिया 2 घंटे से, तो ये से का 2 फॉर्म है, ईदर सिंस और यू कैन से फॉर। तो अब ये सिंस एंड फॉर में किसको कहां पे लगाएंगे, ये टाइम फैक्टर बता दिया। अब 2 घंटा क्या होगा, 2 घंटा हम क्या लिखेंगे, 2 घंटा में यहाँ पे 2 आवर्स लिखेंगे, 2 आवर्स। इस 2 आवर्स के लिए हम जान रहे हैं कि ये आवर्स हो गया है, मतलब प्लूरल है, मतलब ये कॉमन नाम, तो यहाँ पे हम फॉर को यूज। अब यहाँ पे 4 दिनों से, ये भी आपको डेज है, 10 बजे से, अब ये आता है 10 o'clock, 10 o'clock। अब इसको समझिए, ये 10 o'clock ये क्लॉक्स नहीं हो सकती, 10 लिखा है लेकिन दिस इज व्हाट, ये क्लॉक्स नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, सिंस 10 o'clock, क्योंकि ये क्लॉक्स कभी होता है। सुबह से, मॉर्निंग, कभी भी मॉर्निंग्स नहीं बोलते, मॉर्निंग कभी भी मॉर्निंग्स नहीं बोलते या इवनिंग्स नहीं बोलते, तो ये सिंस। तो जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताई है उस मैकेनिज्म पे ही काम कर, आगे कुछ मत सोच, अदरवाइज यू वुड बी आई मीन ओनली कंफ्यूज देयर। सुबह से, 2 घंटे से, कब से, अब ये कब से यू कैन नॉट यू नो आई मीन उसको प्लूरल तुम कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे फॉर व्हेन नहीं लगेगा, सिंस व्हेन लगेगा, सिंस व्हेन, क्योंकि व्हेन को आप प्लूरल बना सकते हो क्या, वो तो सेंस से का सेंस देना होगा ना, कब, कब का मतलब व्हेन, व्हेन लगा दिया, व्हेन, व्हेन का मतलब कब, लेकिन से के लिए आपको एक चीज को यूज करना पड़ेगा कि या तो आप सिंस लगाएं या फिर फॉर लगाएं, फॉर व्हेन या सिंस व्हेन। तो आप कहेंगे सर ये कब को तो हम कभी प्लूरल किया ही नहीं है, दैट्स व्हाई सिंस वुड बी एप्लीकेबल। वेरी गुड। 4 बजे से, तो यहाँ पे फिर से 4 o'clock, 4 o'clock, तो ये 4 बजे से यहाँ पे भी सिंस को यूज करेंगे। शाम से, इवनिंग, मॉर्निंग, ये सब इवनिंग्स नहीं होते हैं, इसलिए आप खुद से यू कैन इजीली तो यू कैन जस्ट इजीली आइडेंटिफाई कि आपको करना है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग बाकी को। इट इज ऑल। तो अगर मैं एक को ही एग्जाम्पल लूं और सारे को बनाने की कोशिश, मार्को 2 घंटे से घूमता आ रहा, तो राइट मार्को के साथ में हैज बीन has यूज been करेंगे, walking for 2 hours. Marco has been For walking 2 for hours. 2 hours. Visiting. घूमता आ रहा है, 2-3 सेंस हो सकता है उसका, कि वो वॉकिंग भी है, Walking नहीं हो सकता. हाँ ठीक है, वॉकिंग ही लिख। सो मार्को हैज बीन वॉकिंग For 2 hours. फॉर 2 hours। देखो जो लोग सीखे हुए हैं वो मेरे बोलने के अकॉर्डिंग उस चीजों को आप प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे। 2 hours, 2 hours नहीं, 2 hours। 2 Right. hours. Marco has been walking, walking नहीं, walking for 2 hours। Right. Walking And for if 2 I hours. talk about नहीं, talk about मार्को के साथ में नेगेटिव को कहाँ यूज करेंगे, तो मार्को hasn't been Hasn't been just walking walking for for 2 2 hours। hours.
right. Hasn't. ये आपको नेगेटिव हो गया। अब आप अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाओगे, then you have to use has or have before the subject. So has Marco Walking. been? जो Been walking. सब्जेक्ट से पहले मूव करता है ना, वो हैज एंड हैव ही मूव करता है। दैट्स इट। हैज मार्को बीन, हैज बीन अलग अलग हो जाएगा। हैज मार्को बीन वॉकिंग फॉर 2 hours? Hasn't Marco been walking for 2 hours? And why has Marco been walking for 2 hours? And why hasn't Marco been walking for 2 hours? So this is not, I mean, writing practice session, but this is the session of, you know, communications. You have to practice orally, you have to speak up and practice that how you would be able to, I mean, get fluent, or you can say you can speak fluently. So Marco has been walking for 2 hours. Marco hasn't been. Has Marco been? Hasn't Marco been? Why has Marco been? And why hasn't Marco been? Right. Walking with 2 hours is a common, but how the structure will be, I mean, move, or, you know, the change that you can just change the structures. It's a matter of, you know, discussing over. So Marco has been, Marco hasn't been, has Marco been, hasn't Marco been, why has Marco been, and why hasn't Marco been. So I just given you the example of this one. So you have to just practice. Amara is there, log, people is there, I, मैं, Marco, मैं कब से, every, I mean, 10 sentences have been given over here. So just go through these all and try to use this ones. And if you have the, you know, I mean, if you just want to improve more and more, so you can grab lots of sentences from your side. You can just even use your own sentences that I have not been, you know, sleeping, or you can say you have not been studying, तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रही हो, so you can say that you have not been studying for 2 hours, right? So there you can use or create your own structure, I mean, sentences by your according to your situation. So I hope you understand the concept of present perfect tense. This is the 4th tense as far as the present tense is concerned. And just this is, you can say, the halt of the present tense, because only 4 tenses which are come under the present tense: the present indifferent, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. So I hope you understand, guys. Let's we move on further. What are the assignments right now? So just look upon. So as well, I had just given you 2 words over here: quite often and quite. So it is frequently used in our day-to-day conversations. It's very essential to understand and learn this ones, because if you are, you know, thinking that how the quite and quite often is used in our day-to-day conversation, so we must, you know this one. So here all. So I mean, for removing your confusion, I just given you quite often means अक्सर, and quite means पूरी तरह से. मैं अक्सर वहां जाता हूं. I go there quite often. Even often is also used for like a verb of frequency. So you can use often means directly you can use often over there. I often go there. I often go there. So, but if you have already used quite often, so you must use at the end of this sentence. So this is the mechanism.
which I mean I'm not interested to speak right now because मुझे इसके बारे में नहीं बोलना है कि कहाँ पे यूज होता है। ऑफन को यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। आई ऑफन इस जगह, आई ऑफन गो देयर। लेकिन क्वाइट ऑफन है, आई क्वाइट ऑफन गो देयर नहीं, आई गो देयर क्वाइट ऑफन। अगर लिखना होता कि मैं अक्सर वहां जाता हूँ, ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑफन, ऑफन का भी मतलब अक्सर ही होता है, तो हम इसको लिखते हैं आई ऑफन। इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ना। हाँ, कुछ लोग पढ़ते हैं ऑफ्टन, राइट, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन ऑफन, राइट, ऑफन। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऑफ्टन गलत है। कुछ फैकल्टी, कुछ जगह पे कम्युनिकेशंस में यही बताया जाता है, नो 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 नो, ऑफ्टन इज रॉन्ग। नो, ऑफ्टन नॉट रॉन्ग, ऑफ्टन इज राइट, right? Because pronunciation varied from place to place, right? If I'm just talking about the French word, I'm not pronouncing like the French or the native French users. So it doesn't mean that I'm using wrong. If I'm just putting the sense before the people and they are grabbing my sense, this is the actual mean of communication, right? So without indulging in the case that what I mean, kind of pronunciations must be appropriate there. Later, we will just discuss that how we can just, you know, upgrade I mean, our pronunciations, or we can use the appropriate sentences. So we will just discuss that. It's the part of, you know, later classes. Definitely, we will discuss. But quite often, अक्सर I go there quite often, and quite का मतलब होता है पूरी तरह से। मैं पूरी तरह ठीक हूँ। I am quite well now. I am quite well now. So you can say that quite often means क्या होगा? अक्सर, and quite का मतलब होगा पूरी। Now change this one. Over small things. हम लोग बहुत सारी चीजों को करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर फिर से मैंने आपको तीसरे सेशन में दिया है ओवर स्मॉल थिंग पे प्रैक्टिस करने के लिए, जिसका मतलब होता है छोटी छोटी बातों। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो, यू गेट एंग्री। गुस्सा हो जाना, यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है, शी शेड्स टीयर। शेड टीयर का मतलब होता है आंसू बहाना। शी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, शी इरिटेटेड। यहां भी था यू गेट एंग्री, गुस्सा होना, यू आई मीन शी गेट्स इरिटेटेड, मतलब कि वो भी इरिटेट। तो वो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाती है, शी गेट्स इरिटेट ओवर स्मॉल। वो छोटी छोटी बातों पर बुरा मत माना करो, यहाँ पे दिया हुआ है। तो डोंट गेट ऑफेंडेड, डोंट गेट ऑफेंड, ऑफेंडेड नहीं होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे भी ईडी हटा लीजिए, डोंट गेट ऑफेंड, और यहाँ पे भी इरिटेट हटा, इरिटेटेड हटा। शी गेट्स इरिटेट, राइट, B3 नहीं। सो डोंट गेट ऑफेंड मतलब बुरा मत माना करो। डोंट गेट ऑफेंड यार ओवर स्मॉल थिंग्स। अभी दोस्तों के साथ आप लोग बोलना स्टार्ट करो। लास्ट सेंटेंस है, मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पे चिल्लाता। माय बॉस शाउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। शाउट्स का मतलब, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तुम छोटी छोटी बातों पर हंसते हो। अब इसका क्या होगा कल मैं पूछूंगा, इसको आप लोग बना के रखो। तो यहां तक मैंने आप लोगों को आज स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स, वर्ड ऑफ द डे और स्पेशल केस में से ओवर स्मॉल थिंग्स मैंने दिया। आप लोगों ने इस चीजों को लर्न किया और आप 15 से 20 या सर बैक वाला क्लास 5 डेज 5 का वो होगा क्या? आप प्रोजोन इंग्लिश एकेडमी हाँ। यूट्यूब चैनल है, उस पे जाकर के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस चीजों को आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे फिर से न्यू सेशन में, और जो भी क्वेरीज होगी आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। Sir, what's the word for
Words for Hello. Sir, what's the word for हमेशा? I mean, WhatsApp पे पूछो मुझसे. कभी कभार. Sometime or the other. कभी कभार. Sometime or the other. Okay. Good night, sir.